Hi, sir. Hi all, good evening. Guys, please let me know if I'm audible. Am I audible? Yes, sir. You're audible. Okay, thank you. Let's wait for a few minutes and then we will start. So guys, before we start, do you have any queries regarding this module, regarding these topics, or do you want to ask something? Any queries? Okay. So guys, can we have a short introduction so that I will be aware of you all? That if you, whether you are a fresher or you have the knowledge of servers or you have or already you are working in any organization. So could you please introduce yourself? Yes, hi. Can you guys hear me? Yes, Vinita, you're audible. Yeah. So I'm Vinita Chandra, and I have been in the IT field more than like 7 years. And Mhm, I worked in the system side and the network side. More mainly, I focus on the network side right now, currently. mhm, So I'm taking care of the server, the switches, router, config, and then firewall, and internet connectivity. mhm. But I also have experience with the system side, but I never had an MC. What is this? The MCSA. Microsoft certification? Mm, Yeah. mm. So I want to know what is the benefit having MCSA over CCNP? Okay, so the thing is, first of all, these are two different path basically. Okay, so server administration is basically if you want to go for cloud, right? For system administration, for cloud operations, or for DevOps engineer, right? So in that case, this is going to help you out. So you mean if there is a no scope in the cloud for networking? Yeah, there is a separate courses in cloud also for the networking, like in AWS, in Azure, it is there. Okay, so the what I'm trying to explain here is, see, servers are basically the backbone of the organizations. Like you have the network, the same thing. Why you need to configure the networks? Why it is needed? This is only Because needed when you want the communication, right? right. Then the communication should be from the end devices. It can be your client machines or it can be your file servers or multiple kind of servers, Yeah. right? So network also, it is a crucial part, and then again servers are also a crucial part. So I can't like debate on that why it is needed, what is good and what is bad, right? The thing is, servers are needed for any of the organization. It is needed, and at the same time, if you want the communication, network is also needed, right?
So the benefit of doing this course is basically if you are going for the Azure cloud administration or you are going for the AWS administration, cloud administration. So in that case, it is going to help you out. Okay, understand. Thank So you so have you much. ever worked Yeah, on I the just DCs or any kind of servers ever, Vinita? yes, yes. AD and no, all the servers I worked. Okay, so you knows about the AD and the types of domain controllers available and then group policies, Yes, everything you're yes, aware of. yes, Okay, then yes. it would be easy Hey, for and you even. Sahit, just to Yeah. let you know that I'm still working, and I will be just mute myself because I have a meeting in 5 minutes, but I will be here. Okay. Yeah, sure. No problem. No Okay. problem. Thank you. Yeah, next please. Hi, sir. This is Savaj. Mhm, Uh, I have a 5 year plus experience. I have started my career as a trainer, hardware networking trainer. So after Oh. 3 years of a trainer, I have joined as a system engineer in a MNC company. mhm, And 2 years of a system engineer, I got opportunity. Presently, I'm working as a senior system engineer. So as a senior system engineer, my job responsibilities are control Active Directory services, GPO, mm, Windows management, WSUS services, and also as well as gateways, firewalls. Here we are using Sophos XC3 135 firewall. So that these are the services I have maintaining every day, day by day, and also others necessary tasks which is given by my company. So I'm mm, doing. So basically, my in my present situation, fully I am connected with a server. mm. My goal is actually in cloud computing. Okay, Okay. so after this course, I also choose in the Azure 102. Oh, sorry, 104. 104. So Mm. that I think it might be the better way to my career. Exactly. So even Shahbaz, if you're already aware of these servers and all, right? So you are Right. working on-prem environment or cloud environment? Both, Both. because Both. in Azure, actually, Microsoft 365 user integration I'm working, and Mm. also the local servers I'm working. Okay. But Got it. not Got depth it. knowledge I have in the cloud, so that Mm, and also as well as I'm going to upgrade myself, because mm, when I was study, mm. it is 2012 R2. Then after that, Okay. many videos are coming, and it's upgraded, but Right. that's why I'm coming and upgrade myself, because Okay. most of the services I don't know, most of the services are confusing for myself, so that's why Right. I'm coming here. Right. No problem. Thanks, Shahbaz. Next, please. Hello, sir. Hi, Jeevan. Hello, sir. My name is Chivan. Sir, I have total 1.8 year experience, and in layoff, I lost my job, and I am searching job, and also side by side doing like this course, also, MCSA course. I have only theoretical knowledge about Active Directory, group policy, server, but not practical. So that's why I'm here for this class. Okay. Thank you, Jeevan. Next, please. Guys, please be fast. Hi, Hi, sir. sir. Hi, Prateek. Hi, sir. This is Prateek Kumar Derwal. I'm currently working as an operations engineer on VMware on Azure and AVD. Mm-hmm. Basically, I have knowledge of on cloud uh, on cloud infrastructure, but I want a bit deep knowledge in this on premises, like in Windows servers and all. That's why I've joined this course so that Okay. I can get myself in the implementation side. Got it. Thanks, Prateek. Next, please. Hi, sir. Hi, Vinay. Myself Vinay. Currently, I am working in Vodafone Idea Limited, and I have a experience on telecom ISP, but I want to build my career in server. Got Domain. it. Got it. Thank you, Vinay. Next, please. Hi, good evening, sir. My name is Naseem Ahmed. Naseem, you are barely audible to me. Can you please come again? Hi, Yeah. hi, sir. I am audible. Yes, you are now.
I'm Naseem Ahmed. I'm working as a desktop support engineer. I have 4 years experience in a desktop support level. So I want to upgrade myself as a system engineer. Okay. So Okay. that's why I joined the networking. Okay. Thank you, Naseem. Next, please. Hello, sir. This is Karthik from Mangalore. Is it audible? Yes, Karthik. You're I'm working as a technical executive for telematic industry. I also work as a freelance desktop, laptop support hardware, and I want to look into server side. okay. Okay. You are from Bangalore, Karthik, huh? Mangalore, M for Mangalore. Bangalore. Okay. Okay. Yeah, Okay. yeah. Okay. 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 Thank you. Thank you. Next, please. Hi, this is Shiv this side. Currently, I'm working as a service desk, and I have approximately 2 year experience. But I want to become our career and on cloud. So Okay. we have purchased both, of course, like MCSA and Azure as well. Azure 104. Okay, that's great. Thank you, Shiv. Next, please. Or are we done? Okay. So finally, from my end, as you know, my name is Sahitya, and I'm going to be a trainer for MCSA, and I have overall 7 years of experience in on-prem as well as cloud. Right now, I'm working as a senior cloud operations engineer in Bangalore in a MNC, and then I'm giving trainings on SCCM, Intunes, AC104. So if you're talking about my certifications, I am a certified Azure administrator. I am a certified AWS cloud practitioner, and I'm a certified MCSA and MCSE. So this is about me. And even in this networkings, so I have been giving trainings from past 4 years. So around I have trained 5,000 of people during my last 5 years, 4 years basically. Yeah, so this is about me. Okay, so now, so in last session, we discussed about the topics that we are going to cover, right? Now, how we are going to perform our labs. So first of all, let me know guys on which tools you want to work on. See, we have the multiple virtualization tools available, right? Either you can work on Hyper-V or you can work on VMware. So do let me know on which tool you want to work. See, in the organization, if you are working in any organization, right? Or if you are going for any interview also, right? So over there in the job profile, you will be able to see if you're going for a system administrator job or a system operations job, then in that case, they will be asking all the tools, like you should be handy on Hyper-V or on VMware. But VMware is nowadays, they are not using much VMware because now they are using Citrix and all. Okay. So depending upon your, like you are already, as per your introduction, you already working in the companies, right? So depending upon the requirement, depending upon your interest, we can choose any of the hypervisor tool. So do let me know on which tool you want to work. Sir, hypervisor. Hyper-V. Hyper-V is the best option because Windows default have a hypervisor. So let's Okay, then great. So Hyper-V, see guys, if you have Windows 10 Pro in your laptop, right? So by default, you will be able to get Hyper-V in that Windows 10 or in that Windows 11. Okay, so what you need to do, just go to turn Windows feature on or off, right? So here you will be able to see Hyper-V. In my case, I'm using Windows 10 Pro version. That is why it is there.
But if you're using home version, Windows 10 home or Windows 11 home, in that case, you will not be able to get it. Okay, but if you want to get, then I will give you one script, right? That script you have to run in your laptop, and then you will be able, and then after running that script, it will ask for a reboot, and after that reboot, you will be able to see Hyper-V in your Windows 10 home version also. One thing, okay? So Hyper-V, there is no as such Hyper-V tool available that you can download from the Microsoft or from any of the website, right? So it is by default available in the Windows or in the server operating system also, right? In server operating system, you will be able to get from its console. You have to just go to add programs, and then from there you will be able to add Hyper-V. Okay, but in case of Windows 10 Pro, you have to go to turn Windows switcher on or off, and from here you have to check on this option. Okay, if you do not have Windows 10 Pro, then in that case I will give you one script, and that script you have to run in your laptop, and you will be able to see Hyper-V, right? And now second thing, how I am going to give these all modules, PPTs, interview questions and all. Okay, so for that I'm going to create one classroom link. Let me create one link here. Let me create a separate classroom for you all. Okay, just give me a moment. Yeah. Okay, so this is going to be MCSA September batch. Okay, and 2023. Right, and then create. Right, so I'm just going to give you this link on the chat. Please join this link, guys. So what and all assignments will be there, what and all PPTs will be there, what and all study materials will be there, what and all interview questions will be there. So all the things you will be able to get in this classroom, right? Under this, I'm going to create some folders with the name. First of all, the study material. Just a second. And let me upload the PDF for okay, so this is the book, MCSA book, right? Along with it, I'm going to give you the PDF of PowerShell also, right? So these PDFs, you can download it. You have the rights to download all these things, right? Okay. Done, right? And then post. Along with it, I'm going to create one more folder with the name PPTs. So what and all PPTs will be there for the topics you will be able to get on this folder. Browse and AD, BitLocker, DFS, DACP, DNS, FSMO, FSRM, right? And this is also NLB, and then RAID, and then shortcuts, then storage pool, and then trust, and then VPN. Sir, as well as please upload the syllabus, which you. Yes, don't worry, Okay. don't worry, don't worry. I'll do everything today. Okay, so this is a study material, right? Along with it, I'm going to create one
assignment folder. Okay. I have to check where I, just a second guys, might be it is on my MCSA August batch classwork. Here it is, assignments. Huh? So with which name it is, drive hyphen download. Okay, I will upload this as well. And okay, you are asking for the syllabus, right? So that Excel sheet, okay, along with it, I'm going to upload some more things which is going to help you out. See, whenever you are going for the interview, the basic questions will be on which port number the services work, right? Either it is HTTP, DNS, FTP, SFTP, DHCP, RDP, SSH, right? So these are the very basic questions. Even if you have a 10 years of experience, then also interviewer is going to ask you. And I can give you my example. So recently I had an interview with Accenture, right? So they asked me about it. Even I'm working as a senior cloud ops engineer. At that time also, in this like they also want to test my basic knowledge, whether I'm very whether I'm clear with the basic concepts or not. Because sometimes people used to forget all these things. Okay, so for that, I'm going to upload one, where it is. Yeah, so this is the PDF under which you will be able to get all the common ports. So these are the common ports. Even this you can download from the internet also, right? But these are the very basic one which interviewer can ask, like Exchange server, okay, and then Kerberos, then SMTP, SSL, okay. So all these things you should be aware of. And I'm going to upload this as well. And these are the interview questions regarding AD, regarding DHCP, DNS, network, and then regarding servers. What and all can be the interview questions based on my experience, based on my past experience, based on the interviews that I had, right? So I have prepared these PDFs, so which is going to help you out in your interviews also. Okay, so let me upload all these things also. Class, just a second. Okay, here first of all, let me upload the syllabus, that Excel sheet basically, okay, from where you can track the topics, that what and all topics we covered, what and all topics are left, right? So based on the topics we covered, so you can mark it green, and you can also track it with me. Okay, so this topics of MCSA, and what else is needed? Okay, so guys, if you want to work on VMware, okay, so for that VMware you can download. If you are going to download from the internet, then in that case you will be able to work on that software for 30 days only, because it is a trial version. Okay, but how to activate it, I can give you the key for that VMware 17. Okay, so you have, if anybody wants to work on VMware, then it would be fine for me. Okay, and I'm just going to upload the key also, so that later on you will be able to activate your tool. Just a second, let me cancel it and let me go back to my August batch. Okay, this is that Hyper-V enabler. So this also I'm going to upload. In case of Windows 10 Home, you have to just run this bat file. Okay. Yeah, so this is the VMware 17 key. VMware 17 key, right? And along with it, let me upload that BitLocker, Trust VPN, shortcuts. So these are the shortcuts.
in order to work on servers, right? So it would always be going to help you when you are going to use shortcut commands, right? Means if you want to access Active Directory, then in that case, no need to go to tools and then select Active Directory. Directly, you can just go to run and then you can type dsa.msc, right? Like you want to access the system properties. No need to go to the properties of system, like in right click on my computer and then go to the properties. Directly, you can type sysdm.cpl. Likewise, there are multiple shortcuts that you can use in your day routine task. Okay. So this shortcut file also I'm going to upload. And these are the topics. And what was that? The third one. MCSA, FSRM, DNS, DFS, BitLocker. Okay. Right. So these are the shortcuts, topics, and that Hyper-V enabler. Huh? That also, let me get it from my base machine. Browse where it is. Okay, I'll check it out. Okay, and I will upload it later on. So meanwhile, this is fine. And then post. Okay, so this is the activation key for VMware 17. This is the shortcut commands that you can use, and these are the topics that we are going to cover. Okay. Now, so hope everyone has joined. Let me check. Okay. And meanwhile, let me again give you the invite link if anybody has joined later. Okay. So this is the invite link, guys. Right from there, you can join the classroom and you will be able to get access of all these things, right? Okay. One thing, then this is done. Topics, PPTs, all things are done. Okay. Now, as you told, you want to work on Hyper-V. So in that case, what I did, I configured my lab on networking servers. I have a separate server, right? I'm not connecting to that racks and all. So I have a separate server and I configured it for me only where I used to configure my lab for SCCM as well as for MCSA. Okay, so if in your case you want to do, then either you can download Hyper-V in your you can install Hyper-V in your laptop or you can download VMware. Okay, but what I did is I configured the lab on networking server. Okay, so let me connect that. And we are going to use 2019 server. Okay, and just for your knowledge, that 2012 server R2 Microsoft is going to expire the support by October 10th. Okay, so you will not be able to use 2012 in your organization. You can use, but Microsoft is not going to give you any kind of support. If any kind of attack is there, then Microsoft is not going to give you any kind of patches and all. But there is a condition. If there is some dependency, basically we do have some dependency in our environment. So what we did is we got the extended security ESU license for that 2012 R2 servers. Okay, so if you have some dependency on 2012 R2 or 2012, in that case, what you have to do, you have to raise a case to Microsoft and you have to get the ESU license for that 2012 R2. And then in that case, Microsoft is going to release the patches for your 2012 R2 servers also. Right. So this is the thing
basically we are dealing with nowadays. So this is what I thought to share it with you all. Sir, I have a question. This Yes, is Savaj. Yes, please. What is the major difference between server 19 and server 22? There is no as such big difference, right? See, basically, whenever Microsoft like we have Windows 10, Windows 11, right? So there would be a comparison. There would be a small, you know, a small change in the console. That's it. Apart from that, all the things you will be able to see in 2019 and 2022. So there is no as such big difference. Yes, if you're asking for 2016 and 2019, then in that case, in 2016 is giving you a feature to configure nano server. Okay, that is basically containers and all. Okay, but in case of 2019 and 2022, it is not there by default. Okay, if interviewer asks me what is the difference between 19 and 22, then what will be the answer? The answer will be there is no as such difference. There is a difference in the console itself, right? Okay. The in case of 2019 and 2022, there is just a difference in console. That's it. Apart from that, you will be able to see all the features and all. Okay. Thank you. Okay, and even as per me, I believe 2012 R2 is the best operating system to work on. Okay, because 2012 R2 is more faster than 2016, 2019, and 2022. If you want to patch that server 2012 R2, it will not going to take more than 10 to 20 minutes. But in case of 2016, 19, or 2022, it will take more than 1 hour to patch, to reboot, and to configure everything. So as per me, 2012 R2 is the best one. But anyways, so now they are going to expire it. Might be they will do some changes onto the server side, and might be there could be. साहित्य सर, Yes, जो आपने please. पहले थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन लोकल सर्वर का जो पूरा इंग्लिश में बताया ना, वो थोड़ा हिंदी में बताइए ना। क्या बताया आशीष मैंने, मैं भूल गया। जो स्टार्ट में आप कॉन्फ़िगरेशन का जो बता रहे थे कुछ, ये जो सारी चीजें है सर्वर लोकल, इसके रिगार्डिंग। सर्वर लोकल, ये कब बात की हमने? कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर का जो पहला है ना टॉपिक। अच्छा, हाइपर-वी कैसे इंस्टॉल करना है? हाँ, तो उस केस में देखो, हाइपर-वी इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास विंडोज 10 प्रो वर्जन अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपको बस अपने सिस्टम के टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ में जाना है। यहाँ पर टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, राइट, और यहाँ पर जाके आपको इसको क्लिक कर देना है, हाइपर-वी को, इसको चेक कर देना है। जैसे ही आप इसको चेक करोगे, सिस्टम एक बार रीबूट लेगा, और रीबूट लेते ही आप अपने सिस्टम पे हाइपर-वी चेक कर सकते हो, और यू कैन कॉन्फ़िगर योर लैब ऑन हाइपर-वी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है VMware। सो VMware को आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा, राइट? जस्ट गो टू द ब्राउजर एंड डाउनलोड VMware. Okay, so go to Workstation Pro and you have to click on this download now. Right, अभी के लिए आपको क्या है, ये use the link below, start your free fully functional for 30-day trial. So it is going to give you a 30-day trial. ये सिर्फ आप 30 दिनों तक यूज कर पाओगे, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स आप यूज नहीं कर पाओगे। बट इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्लासरूम पे आपको ऑलरेडी विंडोज 17 वर्कस्टेशन 17 का VMware 17 का की ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सो दैट आपसे वो कभी एक्टिवेशन के बारे में पूछेगा ही नहीं। आपने बस एक बार एक्टिवेट कर दिया की डाल के, राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दैट VMware 17। तो इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ। If you want to download VMware, if you have a good configuration of machine with you, right, then in that case you can use it. Sir, hello sir, what is the prerequisite of the Windows server? मतलब means configure करने के लिए सिस्टम में कितना ये स्पेस होना चाहिए? Around 8 GB तो देखो मस्ट है,
ठीक है। बट कुछ केसेस में क्या होगा, हमें 3 सर्वर्स और एक क्लाइंट मशीन रन करना पड़ेगा, राइट। सो उस केस में माइट भी आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए, राइट। तो उस केस में जो हमारी वो स्पेसिफिक लैब्स होंगी, वो लैब आप नेटवर्किंग सर्वर्स पे कॉन्फ़िगर कर लेना, ठीक है। बाकी का आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लैपटॉप पे करो बजाय के नेटवर्किंग लैब्स यूज करने का। मुझे कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉरी नेटवर्किंग आपको एक्सेस नहीं दे रहा। एक्सेस आप कर सकते हो कभी भी जब आपका मन चाहे, राइट। बट मैं चाहता हूं कि जब आप खुद से कॉन्फ़िगर करोगे, समटाइम्स इंटरव्यूअर ये भी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स पूछ लेता है ना। तो जब आप खुद से 10-15 बार खुद से इंस्टॉल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी वो चीजें। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप से परफॉर्म करो, ठीक है। यस सर। ओके हाँ जी। सर, ये हाइपर भी यूज करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? ज्यादा प्रतीक वही रिक्वायरमेंट? 8 GB अगर 8 GB अच्छा मिनिमम? है आपके पास लैपटॉप तो मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, राइट। नहीं तो मिनिमम 8 GB तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 सर्वर एक लाइन मशीन का भी रन करना हो तो 8 GB में आराम से चल जाएगा, बट मोर सर, देन दैट वो थोड़ा इशू करेगा। बात ये है सर कि मैं अपने लोकल पर्सनल लैपटॉप में ऑफिस के लिए भी यूज मैं पर्सनल लैपटॉप ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमें थिन क्लाइंट दिया गया था, तो थिन क्लाइंट से काम करना, तो आपको ही पता कैसा होता है। राइट राइट राइट। सो मैं वही पूछ रहा था कि मैं अपने ऑफिस का भी यूज कर सकूंगा ना, कोई इशू तो नहीं बिल्कुल, होगा? ऑफिस में तो वैसे भी विंडोज 10 प्रो होता है जो भी मिलता है आपको, ठीक है। उसमें हाइपर भी इंस्टॉल करो एंड करना शुरू कर दो काम। नहीं, ऑफिस से वो यूज तो दे कर ही रहा नहीं हूँ। रहे सर वो लोग, उन्होंने नहीं, तो मना। ऑफिस वाला ही मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो ऑफिस वाले सिस्टम पे भी अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है तो ऑलरेडी वो तो प्रोफेशनल वर्जन ही देते हैं विंडोज का, ठीक है। हाँ। तो वहां तो बल्कि बस ये टर्न विंडोज ऑफ में जाओ, ऑन और ऑफ में, और हाइपर भी इंस्टॉल करके और अपनी लैब्स इंस्टॉल करना वहां पे शुरू कर दो। सर हाइपर वी के लिए कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है क्या? नहीं नहीं, ये आपकी विंडोज, यही मैंने बोला कि आपकी विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट आता है ये। अगर नहीं, आपके पास एक फॉर सर्वर। नहीं, सर्वर के अंदर भी इंस्टॉल्ड होता है ये ऑलरेडी। मैं दिखाता हूँ मल्टीपल अभी, कर मैं सकते हैं दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, यू कैन डू इट। ओके, आई विल शो यू। आगे चले। यस सर, कंटिन्यू। यस सर। Okay. So this link is basically for to download the VMware, right? Along with it, I have already uploaded the activation key. You can download it and you can activate the VMware, right? And now, as I told you, that I am going to configure the labs on my the server that I have configured on networking. ठीक है। तो यहाँ पे Hyper-V, see, by default, as I told you, whenever you are going to get a activated version or the genuine version of Windows Server, right, you will be able to install Hyper-V. Okay, how to install Hyper-V in case of server? Go to add roles and features. In my case, it is already there. I'm just going to help you out. Okay, so go to add roles and features, go next, next, and here you will be getting one option of Hyper-V. In my case, you can see installed. But when you are going to install the operating system, in that case, it would be unchecked, right? You have to check on it, and then next, it will take a reboot. And then after that, you will be able to see Hyper-V in your server operating system also. Here it is. Here it is. Okay. So this is how you can get Hyper-V when you are going to procure a new Windows Server license. ठीक है जी। After that, so you already aware how we have to activate Hyper-V, or we have to download the VMware, right? After that, how we will be able to get the ISO versions of operating system? See guys, Microsoft क्या करता है? Microsoft आपको evaluation version देता है, right? Evaluation version is basically that you can use that operating system for 6 months. Till 6 months, no need to pay to Microsoft anything. Microsoft आपको वो 6 months के लिए फ्री में ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, right? Likewise, we also have to download the ISO version, which is going to be a evaluation version of the operating system. Okay, so just go to your browser. Don't worry, I will give you the link. Okay, so go to your browser and type down here
download Windows Server 2019. If you want to work on 2022, that is also fine. But as far as I know, 2022 companies are not using for now. They are still working on 2016 and 2019. Okay, but there is no as such, limitation that we cannot work on 2022. If you want to work, then it is fine. Okay, so I'm just going with 2019. And this is the evaluation center, you can see, right? Windows Server 2019 evaluation center, right? Go to this first link. After this, do remind me, guys. I'm going to create a WhatsApp group also, so that if you have any queries or if there would be any change in the class, so I will let you know over there. Okay, change in timing in the class, for the class basically. Okay, so this is a 2019 version. Okay, but I want to download the ISO version of it. Okay, so go to download the ISO. ये नेटवर्किंग सर्वर्स पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, तो मैं अपनी बेस मशीन पे ट्राई कर लेता हूँ. तो ओके, सो दिस इज द 2019. ओके, सो दिस लिंक आल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू इन द चैट. ठीक है, यहाँ से 2019 ISO डाउनलोड कर लो. यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अपनी, राइट? कुछ भी डाल दो, यहाँ पे चलेगा. जैसे मैंने ऐसे कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ मैं. ईमेल, ये भी कुछ ऐसे ही रैंडम ईमेल है. ओके, कंपनी नेम, country, region, India, and then company size, 1024, job role, sysops, right? Country code, India, and type down number like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? And then download now. Okay, so from here you have to select 64-bit edition. So ISO download you have to select, not VHD or not Windows Server on Azure. Okay, so we have to get 64-bit edition. Check on it, select this, and it will start downloading. See, it is started. I'm going to pause it because already I have the version. Okay, I'm not going to download it, but in your case, you have to download the complete 5.3 GB file, ISO file. Right? So this is the server operating system. One ISO you have to download. Now we need to check whether what and all things we are configuring on our server. So at client side also we are able to access it or not. So in that case, we will be needing one client operating system as well. And that is going to be Windows 10. Okay, or you can go with Windows 11 also. अगर आपका laptop support कर रहा है, you can go with Windows 11 also. ठीक है? So again, Windows 10 या फिर Windows 11 का भी आप लोग evaluation version download कर सकते हो. Right? And in case of client system, जो उसका activation होगा, that would be valid for 90 days. Server के case में 6 months, right? And client system के case में it would be 90 days. 3 months के लिए होगा आपके पास evaluation license. ठीक है? So here I will go with Windows 10 Enterprise, and from here you have to download the ISO Enterprise. Okay, so this is the link to download the Windows 10 ISO file. ठीक है? अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड द ISO एंटरप्राइज, एंड फिर से आपका Windows 10 का ISO डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा. So guys, anybody from the group who's not able to understand Hindi?
Anybody? Because based on that only I'm going to deliver all my lectures. That Mangalore guy will be able to understand na Hindi. Yeah, I can understand. Not Okay. complex Hindi and normal Hindi. Okay. Okay. Okay, then I believe wherever it is needed. So if you guys are not able to understand, then I will be explaining it in Hindi as well. Okay, the same thing, you have to put down some information here. You have to put down some information here like you did for the servers, and then you will be able to download the Windows 10 ISO file. Right? Let me show you. I have already downloaded all these files. See, I'll go to C drive. Okay, it is in my downloads. Yeah, so here it is. Windows 10 ISO, Windows 11 ISO, Windows 7 ISO, Windows 2019 ISO, Server 2019 ISO. So what we did so far, how to enable Hyper-V, how to get VMware, how to activate it, then how to download the server operating system and the client operating system. So all these things we did so far, right? Now to create the virtual machine, the VM. Let me exit the download. We do not need the download. I already have the download file. Now how we can create our VM? I'll be showing you in both the cases. If you are working on VMware or if you are working on Hyper-V. So in both the cases, I will be help you out to create a virtual machine. Okay. So I'll go to the Hyper-V. Right. And here I'm going to create new virtual machine. In your case, it would be blank because these virtual machines I have already created. In your case, it would be blank. Right? So how to create the VM? Just go to new and then select virtual machine VM, right? And then go next. Now the name of the virtual machine, right? So what name you want to give? Let's say I'm just giving server -3. I already have 1, 2 PDC. So I'm just going to give the name as server -3, right? And then go next. Now generation 1 and generation 2. Generation 1 machines are basically if you have the Windows version that have 32-bit virtual, that has 32-bit architecture, and it is going to support BIOS, not UEFI, right? But nowadays, what and all systems we are getting, what and all servers we are getting that are UEFI based and that are 64-bit operating system. Even client also, or even server operating system also, majorly we used to get 64-bit operating system. There is one more major difference, guys. Even I will let you know in the topic of storage also, but abhi baat aa rahi hai, to let me explain it. देखो, in case of generation 1, or generation 1 is क्या है जो BIOS को support करता है, right? So in case of generation 1, you will not be able to use hard disk which is more than 2 TB. सर्वर के अंदर अगर मोर देन 2 TB हार्ड डिस्क है तो आप उसको जनरेशन 1 मशीन के थ्रू डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज बायोस सपोर्ट करता ही नहीं, इट सपोर्ट्स द हार्ड डिस्क विच इज लेस देन 2 TB. फॉर मोर देन 2 TB, बिकॉज सर्वर के केस में तो हमारे पास कितने टीबीज की पेटाबाइट्स हमारे पास हार्ड डिस्क होते हैं सर्वर के केस में, राइट? तो जब उस केस में बायोस सपोर्ट करेगा ही नहीं,
तो कैसे फिर हमारी हार्ड डिस्क को वो रीड करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई the UEFI is there, and you can see here as UEFI based firmware. इसका जो firmware है that is BIOS based, okay, and in case of generation 2 it is UEFI based. ठीक है? In case of UEFI, what is the major difference between BIOS and UEFI? You will not be able to use hard disk more than which is more than 2 TB. In case of BIOS, you will not be able to use that hard disk because it doesn't support that. ठीक है? और भी इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आई विल लेट यू नो इन द स्टोरेज टॉपिक, बट अभी के लिए जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 समझना हमारे लिए जरूरी है, राइट? क्यों हम जनरेशन 2 कर रहे हैं मशीन कॉन्फ़िगर? बिकॉज जनरेशन 2 सपोर्ट्स 64 बिट. इवन द सेम थिंग गाइस, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एज्योर, राइट, वहां भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा whether you want to configure as generation 1 or generation 2. So it depends. कभी आपकी एप्लीकेशन कोई होती है जो 64 बिट को सपोर्ट नहीं करती, जो 32 बिट को सपोर्ट करती है, राइट? सो उस केस में आपको जनरेशन 1 मशीन बनाना पड़ेगा, राइट? बट जहां पर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज गो विद जनरेशन 2. ठीक है? ओके, नाउ गो नेक्स्ट गाइस. वेयरएवर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क स्ट्रेट अवे. ठीक है? तो मेरी क्लास कुछ ऐसी नहीं है कि मैं खत्म करूं तब आप बोलो. मेरे अगर अब मैं कुछ टॉपिक करा रहा हूं, उस टाइम आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझसे. ठीक है? ओके, नाउ गो नेक्स्ट. नाउ वी हैव टू असाइन द रैम साइज. अब देखो, कोई भी एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए व्हाट एंड ऑल आर प्रीरिक्विजिट? मेमोरी एंड हार्ड डिस्क. मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू नहीं दोगे? सीपीयू है ना? सीपीयू भी देना पड़ेगा, राइट? Exactly. The same thing we have to do for virtual machine also. अब ये virtual machine RAM कहां से लेगा? और सिस्टम रैम से. Exactly. From my base machine, from my host operating system, it is going to take the RAM. ठीक है? अब वही मैं बोला, अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन असाइन 1024 और 2048 और 2048 2 GB RAM you can assign based on the size you have in your laptop according to that. But मेरा जो ये सर्वर है, इसमें अराउंड 64 GB रैम है. ये एक प्रॉपर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? जो एक सर्वर मैंने पूरा हार्डवेयर पे कॉन्फ़िगर करा हुआ है. ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूं, तो मेरा जो मेमोरी है, ये 64 GB मेमोरी है. ठीक है? तो इसमें से मैं तो कितना भी असाइन कर सकता हूँ, इट डजंट मैटर. हाँ, जितना मेमोरी अच्छा देंगे, जितना वर्चुअल सीपीयू ज्यादा देंगे, उतना आपका वर्चुअल मशीन फास्ट काम करेगा. As simple as that, right? Higher will be the compute power, higher will be the processing power. Sir, 16 GB is enough, no? Yeah, 16 GB is more than enough. Okay, yeah. So I'm just going to assign 4096 4 GB RAM. I'm going to assign for this VM, right? And now go next. Connection is basically the network adapter, right? So the network connection also, now we are going to create the virtualized network. मतलब जो आपका LAN कार्ड होगा, उस LAN कार्ड को हम virtualized environment पे हम यूज करेंगे. Okay, so there are multiple network connections that we can create. If you want, we can create our own connection also, like I did. See, this switch 2 I configured, this internet I configured, this internal network I configured. Okay, so for that, what you need to do, you have to go to the virtual switch manager. मैं भी दिखाता हूँ उसके लिए, ठीक है? But अभी के लिए I am going to use internal network because I don't want to communicate this machine with internet, right? I want
the machines which I'm going to create here, they will be able to talk to each other. In that case, I'm going to use internal network. Wherever I will be needing the internet on the machine, in that case, I will switch to the internet network adapter. Okay, so for now, internal network I'm choosing, and then go next. Now this is the hard disk size that you have to define, the hard disk name you have to define. Okay, so size I'm just going to give 60 GB. In your case, guys, 40 GB is more than enough. For any of the virtual machine, you have to assign 40 GB hard disk. Okay, this is fine, 60 GB, and then go next. Now you have to mount the ISO file. Operating system कैसे install होगा? अगर हम ये mount नहीं करेंगे ISO, we will not be able to install the operating system, right? So you have to choose install operating system from a bootable image file. मतलब जैसे आप करते हो ना, अपने सर्वर पे आपने DVD डाल दी, DVD राइटर में डाला, आपने CD डाला, DVD डाला और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, राइट? द सेम थिंग आई एम डूइंग. मैंने क्या किया, मैंने इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द बूटेबल इमेज फाइल चूज किया. उसके बाद में मीडिया फाइल, तो मीडिया के लिए आई विल ब्राउज टू द ऑप्शन, I'll browse to the location where actually I have the ISO image of 2019. ठीक है, तो मैंने ब्राउज किया, डाउनलोड्स पे आ गया ये. अगर आपके केस में ये डाउनलोड्स में नहीं है, कहीं और पड़ा है, सो अगेन यू कैन ब्राउज इट एंड यू कैन माउंट इट. ओके, so I'm just going to select server 2019 and then open. That is fine. Now go next and finish. So this is the virtual machine server 3. Now it is created. Okay, and then right click on it and you have to select connect and then start. After this, you have to just type on any of the key. नॉर्मल ESXi के जैसा ही काम करता है. बिल्कुल 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 बिल्कुल. इवन जो ये सर्वर मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये EXI पे ही कॉन्फ़िगर है. Racks. Yes, racks. Next, and then install now. Okay, now we have some version standard evaluation. See, standard evaluation is basically a core server जहां पे आपको बस कमांड लाइन होगा. ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन होगा, राइट? यू हैव टू यूज PowerShell कमांड्स इन दैट केस. अभी के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे. वी हैव द टॉपिक ऑफ PowerShell ओवर देयर. वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द कोर सर्वर. सर इसे वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हैं ना, VMware बिल्कुल पर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. वर्चुअल बॉक्स पे कर लो, अपना VMware पे कर लो, कहीं भी कर लो. ठीक है, कोई इशू नहीं है. Okay, so desktop experience I'm going to choose because जो ये option होता है, this is a graphical user interface, GUI. ठीक है, so core server for now, no need to select standard evaluation. We are going to select it later on. Okay, for now we will going to work on the graphical based operating system. Then go next, and then I accept the license terms. Next, okay, upgrade and custom. If you have a operating system 2012 R2 running on this VM and you want to upgrade it, then in that case you can choose upgrade option, right? But for now we are going to configure it from very scratch, so in that case we have to select custom installation, right? After select the custom, it will redirect you to the hard disk that you have created. So I assigned 60 GB hard disk size, so you can see 60 GB, and then if you want to create a new hard disk, then you can do it, but it is not needed for us. So I'm just going to use this default hard disk size. I am not going to create a partition of it. Okay, then go next. And that's it. After this, it will going to start the installation. It is started. Right, and let me go through. Let me help you out on VMware also,
how you can create the VM on VMware. Okay, it's the same process, right? कुछ ऐसा major difference नहीं है, बस वो vendor difference हो गया कि वहां पर वो Microsoft का tool use कर रहे हो, यहाँ पर आप VMware का tool use कर रहे हो. That's it. ठीक है, तो यहाँ पे जाओगे create new virtual machine. Now go next. Even if here you want to mount the image, ISO image, you can do it. But अगर आप बाद में भी करना चाहते हो, you can select I will install the operating system later. That is also fine. ठीक है, now go next. Now Microsoft Windows, Linux, VMware or other. So I want to install Microsoft Windows operating system. What kind of operating system you want to install? I want to install 2019. Right, now go next. Virtual machine name, whatever the name you want to define to your VM, you can define it. Right, now go next. See, वहां पर आया था generation 1 generation 2, same चीज यहाँ पे, that is BIOS and UEFI. Okay, so we are going to use UEFI. And then go next. Number of processor, virtual CPUs that you have to define. Okay, now go next. It is fine, go next. And then the RAM size, depending upon the RAM of your host machine, of your base machine, you can assign RAM to your system, your virtual machine. ठीक है, and now go next. Network part. ठीक है, अब देखो यहाँ पे NAT ऑप्शन आ रहा है, ब्रिज नेटवर्क आ रहा है, होस्ट ओनली नेटवर्किंग आ रहा है. हमने वहां क्या यूज किया था? इंटरनल नेटवर्किंग. Right, so if you want to use the same internal networking here, then in that case you have to use host only networking. In that case you will not be able to access internet on the machines, and you will only be able to communicate the machines internally. Not even you are not able to communicate with my base machine as well if you are going to choose host only. Right, so what you are doing, basically you are isolating all the virtual machine outside this environment. तो इसी environment में जो भी VMs आप create करोगे वो आपस में बात करेंगी. Right, अगर वो आप इंटरनेट चाहते हो तो in that case we have to work around on these two network adapters, netting और bridge networking. In case of host only networking, आप सिर्फ within these virtual machine, जितने भी यहाँ पे virtual machines होंगी उनके साथ बात कर पाओगे. ठीक है, बात करने पाने का मतलब कि ये सारी virtual machine आपस में communicate करेंगी. ठीक है, now go next. Next, virtual disk type. So in case you are using SSD in your laptop, then in that case you will be getting NVMe option. ठीक है, अगर नहीं है तो उस केस में आपको SATA चूज करना पड़ेगा. Right, so in my case I do have, so I'm just going with NVMe. And then next create a new virtual disk, and then you have to define the size of virtual disk here. So let's say 30 GB I'm going to define. Now go next, here you can choose store virtual disk as a single file. Now go next, and finish. That's it, your VM is created. But आपको याद होगा मैंने ISO image mount नहीं किया, right? So we have to mount the ISO file. Go to CD DVD option. और आपने यहाँ क्या किया? आपने यहाँ पे ISO image को माउंट करवा दिया ब्राउज करके. कहाँ पर है आपका ISO? So आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. अच्छा, मेरे पास 2019 नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 2016 कर लेते हैं. So I will select this 2016. मेरे बेस मशीन पे मेरे पास 2019 नहीं है, वो 2019 मैंने नेटवर्किंग वाले सर्वर पे डाउनलोड किया था. That is why I am not getting here. Okay, so just 2016 I'm going to select open. So this is also the evaluation version. देखो eval. Okay, so this is the evaluation version. And then go select OK, and then power on this virtual machine. It is also started. The same way, I do not have VirtualBox in my laptop. The same way you have to do for VirtualBox also. Right? Let it install. Meanwhile, I'll see what's going on with my
Hyper-V. Okay, hopefully, yeah, it is done, I believe. So guys, daily we are going to have the class for 1.5 hours. Okay. Means it would be from 10 to 11:30. So hope it is fine for everyone. Okay. See, so my server is created, right? My VM is created, and now I have to give the admin password. Okay, the local administrator password. So you can give whatever you want. मैं normally abcd@1234 देता हूँ because मेरे को passwords याद नहीं रहते. Even अब तो मैंने अपनी मशीन में like I started using KeePass. वहां पर अपने पासवर्ड स्टोर करके रखता हूँ so that issue ना हो कोई. Okay, so this is the operating system that we created, right? Just log in onto it, Control Alt Delete, and then give the password. So if anybody want to perform this lab, to perform this thing, you can try it in your laptop, right? And do let me know if you're facing any kind of issue. So this is the operating system that we created. Okay, so if I want it on my full screen, then in that case I'll go to the properties, display settings, and I will use the resolution as 1920, keep changes, and the 150%. Yeah, it is done. So this is the server operating system. This is the virtual machine that we have configured, the first virtual machine that we have configured on the Hyper-V. The same way you have to do. Okay, so initially guys, I would recommend you to configure 2 virtual machine of server and 1 virtual machine for, or the same 2 virtual machine for Windows operating system also, the client operating system also, right? And then depending upon our requirement, we are going to power it on. हर टाइम हमें वो चारों मशीन्स पावर ऑन करके नहीं रखना है. अगर आप उसको पावर ऑन नहीं कर रहे हो तो उस केस में वो ना ही आपका सीपीयू यूज करेगा और ना ही आपका रैम यूज करेगा. ठीक है, जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे उस टाइम वो आपके सीपीयू और रैम को यूज करना शुरू करेगा. ठीक है, तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, then we are going to power on the 2 servers or power on the 2 client machines or 1 server. तो इनिशियली आपको 2 सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं और 2 क्लाइंट मशीन कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है, अब देखो सर्वर के केस में जैसे हमने इंस्टॉल किया, I'll go to add roles and features. Now go next, next. अब देखो यहाँ पे वो Hyper-V ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? आपको चेक करना है एंड इंस्टॉल कर देना है इन केस ऑफ सर्वर्स इफ यू वांट टू डू, राइट? एंड जब भी सर्वर्स पे काम करो, whenever you are working on the servers, so in that case you have to make sure कि आप उसका host name change करो, right? Sometimes it is not easy for us to remember the host names. Okay, so you can go to the computer name and you can change the host name from change, and you can change the computer name. Now let's say I'm going to give the name as server-3. Right, ऐसे ही the same thing, if you want you can do it through PowerShell also. अभी के लिए बस एक छोटी सी कमांड बता रहा हूँ, लेटर ऑन जब काम करेंगे तो और अच्छे कमांड बताऊंगा, राइट? बेसिक कमांड्स आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट. जस्ट गो टू PowerShell, जहां पे आप विंडोज असाइन कर सकते हो, होस्ट नेम असाइन कर सकते हो, आईपीज असाइन कर सकते हो अपनी वीएम्स को. ठीक है, तो क्या करना है आपको,
PowerShell में आना है एंड यहाँ पे टाइप करो sconfig, that means server configuration, sconfig, and then enter. So you will be able to see some basic options here, that is domain, computer name, local administrator, configure remote management, Windows update services, and so on. The network services also you can see, network settings, remote desktop also you can see, right? So if you want to change the computer name, then in that case जो जिस भी फीचर पे आपको जाना है उस फीचर का नंबर टाइप कर दो, ठीक है? जैसे मुझे कंप्यूटर नेम चेंज करना है, सो आई विल टाइप हियर नंबर 2 and then enter. So it is asking me enter new computer name. Okay, so I'm going to give the computer name as server-3 and then enter. So in order to make the changes, it is going to take the reboot. Okay, but I will do that reboot later on. So I will select no. Then how you can give the IP? See, one more thing, you have to remember one more thing. Whenever you are working with the servers, server should have the static IPs. DHCP से IP कभी असाइन नहीं करना. See, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप DHCP के साथ काम नहीं कर सकते सर्वर पे. But it is always recommended whenever you are working on servers, so you should assign the static IP to it. क्योंकि DHCP केस में क्या होता है कि कई बार देयर इज IP कॉन्फ्लिक्ट, कई बार स्कोप में कुछ चेंजेस हो गए, राइट? तो क्या पता सर्वर की भी IP चेंज हो जाए, है ना? और उसी IP से आपके क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं कुछ सर्विसेज को. सो इन दैट केस देयर वुड बी conflict, it would be messed up everything, right? So that is why it is recommended that you should assign the static IP to your VMs or your servers basically. ठीक है? तो IPs तो आपको पता ही है. Either you can go to the network editor, you can go to network settings, or you can go to run and you can type ncpa.cpl. So ये सारे शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो उसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, so that it will going to help you out in real time also. क्योंकि देखो, अगर मैं यहां से जाऊंगा, इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है, राइट? आप कुछ शॉर्टकट्स यूज करोगे, आपके कलीग्स को भी, आपके मैनेजर को भी लगेगा कि यस ही वांट्स सम, इसको पता है चीजों का, ठीक है? तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है हमें. ये सब चीजें हम ग्राफिकली भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? बट हम लोगों से अलग कैसे होंगे? when we start working on these shortcuts, when we start working on the PowerShell commands, right? वहां पर हम थोड़ा सा अलग और फिर हम कंपनी में शाइन कर सकते हैं, ठीक है? So either you can go with ncpa cpl, ncpa.cpl, or you can in the server config command you can type here number 8, that is network settings number 8, and then enter. Now for now you can see the IP that I'm getting on this machine is of 169.254.77.107. Why it is so? अपीपा क्यों आ रहा है मुझे ये? क्योंकि कोई DHCP सर्वर असाइन नहीं है. DHCP अवेलेबल नहीं है सर. कोई भी स्टैटिक IP नहीं दी है. वेरी गुड, ठीक है? तो एक चीज और फॉर एवरीवन, अब आपको पता ही है वैसे तो. देखो, अगर you are getting the IP of this series 169.254. so on and so on, in that case या तो आपके एनवायरनमेंट में DHCP सर्वर नहीं है, या ये मशीन आपके DHCP सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रही, या आपने कोई भी स्टैटिक IP इस VM को, इस सर्वर को असाइन नहीं किया, राइट? सो ये अपीपा बाय डिफॉल्ट whenever there will be a active network card on your laptop, राइट? और उस टाइम उसका वो डिफॉल्ट IP होता है बेसिकली, right? So if it is not able to communicate with your DHCP server, or if you have not assigned a static IP to your server, in that case you will be getting this series of IP, and this IP is called as APIPA, right? In real time you will not be able to use it, right? If you want the communication, if you want that your clients will be able to reach to your servers, then in that case you have to assign the IP to your usable IP to your server. This is not a usable IP, ठीक है? So
You have to select the network adapter index value. You can see index 1. It might possible that there would be multiple network cards on a server. ठीक है, 5 कार्ड भी हो सकते हैं, 10 कार्ड भी हो सकते हैं, या फिर यू कैन कस्टमाइज ऑल्सो. किसी सर्वर के आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 नेटवर्क कार्ड चाहिए एक हार्डवेयर में, तो जिस भी वेंडर से आप प्रोक्योर कर रहे हो अपना सर्वर, like it is Dell or it is HP, then in that case you can ask them that I will be needing 20 network cards, so they will customize your hardware depending upon your need. ठीक है, बट अब वो चीजें जरूरत नहीं है. वर्चुअलाइज्ड है तो वर्चुअलाइज्ड में कितने भी नेटवर्क ऐड कर लो, कितने भी नेटवर्क अडेप्टर से ऐड कर लो, इट डजंट मैटर एट ऑल. ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको. या फिर इवन ऐसा नहीं है कि सभी की सारी कंपनियां वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट यूज कर रही होंगी या फिर क्लाउड यूज कर रही होंगी. कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो ऑन प्रिम पे काम कर रही हैं प्योरली. राइट, जैसे मैं आपको बैंकिंग का एग्जांपल देता हूँ. बैंक्स होते हैं जितने भी है, तो जितना भी उनका इंटरनल डेटा है, जितना भी इंटरनल डेटा है, जो भी कस्टमर डेटा है, it is going to be there on their on-prem servers, not on cloud. क्लाउड पे क्या होगा, उनकी इंटरनेट बैंकिंग, जो भी कस्टमर को वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, that all things are going to be on cloud. बट जो बैक एंड उनके डेटाबेसेस होंगे, उनके अकाउंट्स इंफॉर्मेशन होंगी, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन प्रिम, बिकॉज वो अभी भी ये रिलाई करते हैं कि दे डोंट ट्रस्ट क्लाउड, कि क्लाउड पे मेरा डेटा चोरी हो सकता है. Although Microsoft और AWS 99.9% assure करता है अपने कस्टमर को that there will be no data loss, still these banks are not relying, they're not relying them. 0.1% chance फिर भी है कि data loss हो जाए. So that is why the major banks are keeping their data onto their on-prem environment. ऐसा नहीं है guys कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा on-prem, नहीं. 10% ऑर्गेनाइजेशन फिर भी होंगी all over world, they would be working on the on-prem environment, not on the cloud. ठीक है, तो ये मिथ बिल्कुल भी मत रखना कि बिल्कुल ही क्लाउड. हाँ, नो डाउट क्लाउड ग्रो कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, और इवन 2025 80% कंपनीज विल मूव टू द क्लाउड. ठीक है, बट फिर भी देयर वुड बी द जॉब्स इन ऑन-प्रेम डेटा सेंटर्स आल्सो. ठीक है, okay, so I want to change the IP on this index value 1, so I will type number 1 here and then enter. Now how you want to assign the IP? Okay, so you can see set network adapter address. I will type number 1 here and then enter. Now it is asking select DHCP or S. D for DHCP, S for static. So I want to assign the static IP. I'll type S here and then enter. Now it is asking what IP address you want to assign. Right? Let's say I'm just going to assign 192.168.1.100 or 1.1. Let's assign 1.1 and then enter. Now it is asking me for the subnet mask. It is also needed. So if you did the subnetting, in that case, obviously the subnet mask will be different. But if you want to use the default one, then just leave it as blank. Automatically, it will take the default subnet mask. Gateway, if it is there, then you can define the gateway. For now, it is not needed. So I'm just going to leave it as blank and then done. Now the IP address is 1.1. ये आज मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा लगा होगा प्रोसेस. जब आप खुद रूटीन में इसको यूज करोगे एज कॉन्फिग में, हाथ अपने आप बैठ जाएगा. ठीक है, सो नाउ यस प्लीज. सर ये जो अपन आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस देंगे इस पे, हाँ जी, फिर डीएचसीपी इस आईपी को किसी और को नहीं दे पाएगा ना? नो. तो आपको वो अपने याद देखो, वो आप अपने स्कोप में डिफाइन कर सकते हो. राइट, सो इन योर स्कोप यू कैन डिफाइन अ एक्सक्लूजन रेंज. आपने एक्सक्लूजन रेंज बना दी 1.1 से 1.10 तक आईपी असाइन नहीं करना, तो वो डीएचसीपी किसी भी मशीन को 1.1 से 1.10 को
आईपी किसी भी मशीन को असाइन नहीं करेगा। ओके, अपने डीएमजेड जोन के लिए। हाँ, डीएमजेड जोन वो अलग चीज है, राइट? जोन वो भी बनाना चाहते हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए आई विल लेट यू नो इन द डीएचसीपी हाउ वी कैन डिफाइन द एक्सक्लूजन आईपीज, एक्सक्लूजन रेंज, ठीक है। Hello. Yes, please. Hello, sir. I want to know that where we use PowerShell. मतलब सर्वर के मतलब ग्राफिकली जब भी हम यूज करेंगे या ये कहाँ पे यूज होता है PowerShell? देखो, पावरशेल किस लिए यूज होता है? सबसे पहले पावरशेल इज द कमांड। जैसे आप लिनक्स यूज करते हो, ठीक है, लिनक्स में कोई आपको एक डीएचसीपी सर्वर बनाना है, कोई आपको एक डीएनएस सर्वर बनाना है, ठीक है, तो ग्राफिकल तो उसमें होगा नहीं, तो आपको कमांड डालनी पड़ेगी सारी। तो सेम वे अगर आप देखो, डिफरेंस क्या है, अगर आप कोर, यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, कोर सर्वर यूज कर रहे हो और ग्राफिकल यूज कर रहे हो। कोर सर्वर के केस में द प्रोसेसिंग विल बी हाई, क्योंकि कोर सर्वर को रन करने के लिए यू विल बी नीडिंग ओनली मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है। बट ग्राफिकल को यूज करने के लिए ह्यूज रिसोर्सेज विल बी नीडेड, तभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग इन केस ऑफ ग्राफिकल थोड़ा स्लो होता है इफ आई एम कंपेयरिंग टू द कमांड बेस्ड, ठीक है। बट जहां पर हमें कमांड बेस्ड सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हैं, इन दैट केस वी शुड बी हैंडी विद द पावरशेल कमांड्स। तभी हम, जैसे आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, जब तक आपको लिनक्स की कमांड ही नहीं पता होंगी, आप उसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, है ना? ऐसे ही कोर सर्वर के केस में जब तक आपको पावरशेल नहीं पता होगा, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन टू इट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पावरशेल आप सिर्फ कोर सर्वर में यूज कर सकते हो, ठीक है, पावरशेल आप ग्राफिकल सर्वर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। Okay, thanks, sir. या चलो जी, so this is done. So I will return to the main menu. I will type number 4 here. ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, कोई भी कुछ मैं अलग टाइप नहीं कर रहा। And then as I change the server name, I have to take the reboot, right? So I will type number 13 to restart it. See, number 13 what says? Restart server, and then enter, and then yes, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट होता है। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे VMware पे भी VM बन गई होगी। इट इज डन। अरे हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया, ओ माय बैड गाइस। इंस्टॉल नाउ, इसको स्टार्ट करना भूल गए हम प्रोसेस को। Right, so here also I'm going to use desktop experience. Next, इवन आप कंपेयर करोगे ना कोर सर्वर को, कोर सर्वर की इंस्टॉलेशन और ग्राफिकल की इंस्टॉलेशन, कोर सर्वर जल्दी इंस्टॉल होगा एज कंपेयर टू ग्राफिकल, ठीक है। I accept, and then next, and again custom, as you are going to install it from very scratch, and then go next, and it is going to start the installation of the virtual machine of your server 2016, ठीक है। Let it take time. Meanwhile मैं वापस चलता हूँ अपने सर्वर पे, उधर कनेक्ट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और बहुत जरूरी है। एवरी टाइम गाइज, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर हो जाए, राइट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दैट वर्चुअल मशीन। नाउ व्हाट इज स्नैपशॉट? कोई बता सकता है व्हाट इज स्नैपशॉट और व्हाट इज चेक पॉइंट? एज इट इज उसकी इमेज ले लेना सर। एग्जैक्टली, करंट सर्वर की स्क्रीनशॉट होता ना सर? हाँ जी, स्क्रीनशॉट नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, स्नैपशॉट। Snapshot is basically taking the or you can say capturing the current image of the server, capturing the current status of the server. This is the correct word, capturing current status of the server, ठीक है। अब देखो ये मुझे क्या हेल्प करेगा। In some practicals I will be needing fresh servers, ठीक है। अब मुझे फ्रेश सर्वर चाहिए होगा तो हर बार मैं एक नया सर्वर कॉन्फ़िगर करने तो नहीं जाऊंगा। Why to configure one new server again and again? So whenever it is needed, whenever a
fresh state of a VM is needed. जैसे ही आपने VM बनाई, राइट, जैसे ही आपने यहाँ पे इसको होस्ट नेम दे दिया, राइट, what you have to do, you have to right click on it and you have to select checkpoint. In case of Hyper-V इसको checkpoint बोलते हैं, and in case of VMware इसको snapshot बोलते हैं. काम वही है दोनों का, बस वो थोड़ी सी टर्म्स चेंज हो गई हैं उधर, ठीक है, वहां पे उसको snapshot बोलते हैं. Here it is called as checkpoint. So you have to create a checkpoint. सर वर्चुअल बॉक्स में किस नाम से आएगा? ये snapshot होगा वहां पे भी, ठीक है, राइट क्लिक करना वहां पता लग जाएगा, ठीक है. मैंने ज्यादा वर्चुअल बॉक्स में काम नहीं किया, थोड़ा सा नाम मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, तो चेक पॉइंट या फिर स्नैपशॉट दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है. ओके, नाउ दिस इज द चेक पॉइंट दैट वी हैव क्रिएटेड, राइट. और जैसे ये क्रिएट हो जाए, इसको राइट क्लिक करो और इसको रीनेम कर दो फ्रॉम फ्रेश सर्वर, दैट्स इट. और अब आप इस अगर वीएम को शट डाउन भी करोगे, टर्न ऑफ भी करोगे, तो जब भी आपको एक फ्रेश सर्वर पे काम करना है, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे केस में देखो, ये देखो मैंने पीडीसी सर्वर बनाया है और एक मैंने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है. तो जब भी मुझे पीडीसी पे काम करना है, जब भी मुझे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे काम करना है, जहां पे मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर ना कर रखा हो, बस एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर्ड हो, राइट. सो आई विल गो टू दैट चेक पॉइंट, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड आई विल अप्लाई इट एंड देन अप्लाई. जैसे ही अप्लाई करूंगा, अप्लाई करते ही इसको स्टार्ट कर दो, दैट्स इट. तो अब जो ये मशीन स्टार्ट होगी वो इस स्नैपशॉट से स्टार्ट हो रही है, राइट. लाइकवाइज इफ आई वांट टू वर्क ऑन अ फ्रेश सर्वर, देखो मैंने सभी मशीन्स का फ्रेश सर्वर एक स्नैपशॉट चेक पॉइंट लिया हुआ है, क्योंकि कई बार हो सकता है मुझे 3 सर्वर की जरूरत हो फ्रेश सर्वर की, तो क्या मैं फिर से एक नई वर्चुअल मशीन बनाऊं, अपने 10 या 5 या 10 मिनट खराब करूं उसमें, राइट. सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, राइट. और इसका एक और मेजर हेल्प बताता हूं आपको क्या होता है. whenever you are doing very critical operation on the server, आपको एक टास्क दिया आपके मैनेजर ने, राइट, that you have to deploy some patches onto the server, ठीक है. आपने कोई चेक पॉइंट नहीं लिया, आप डायरेक्टली गए सर्वर पे, और वो सर्वर प्रोडक्शन सर्वर है, बहुत क्रिटिकल सर्वर है वो, राइट. आप गए उस सर्वर पे और आपने वो पैच इंस्टॉल करना शुरू कर दिया. नाउ देयर इज सम इश्यू विद दैट पैच. उस पैच ने कुछ आपकी फाइल्स को करप्ट कर दिया, हो सकता है ऐसा, राइट. आई फेस्ड इट, राइट. सो इफ दैट सर्वर इज करप्टेड, ऑब्वियसली जैसे ही वो सर्वर करप्ट हुआ, आप उसको पावर ऑन नहीं कर सकते, उस पर जो एप्लीकेशन चल रही थी वो एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज डाउन. अब क्या करोगे? दोबारा बैठोगे सर्वर बनाने, दोबारा से सारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे, सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे, और ऊपर से प्रेशर अलग मैनेजर का, राइट. सो क्या करो, जब भी ऐसी कोई क्रिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो, राइट, ऑलवेज टेक द स्नैपशॉट. अब मैंने क्या किया, अब दोबारा दूसरा सिनेरियो आ गया, पैच मुझे वो इंस्टॉल करना है, ठीक है. मैं पैच इंस्टॉल करने गया, बट उसको इंस्टॉल करने से पहले व्हाट आई डिड, आई टुक द स्नैपशॉट ऑफ द सर्वर, जिस टाइम वो सर्वर एकदम सही काम कर रहा था. आई टुक द स्नैपशॉट ऑफ इट, राइट. और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पैचिंग करना, पैच इंस्टॉल करना. बट वो पैच जैसे इंस्टॉल किया, उसने मेरे सर्वर को करप्ट कर दिया. अब मुझे दोबारा से सर्वर को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्मार्टली प्ले किया. व्हाट आई डिड, आई टुक द स्नैपशॉट. मैं क्या करूंगा, मैं उस स्नैपशॉट पे जाऊंगा जहां पे वो सर्वर एकदम सही काम कर रहा था, उसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करते ही उसको पावर ऑन कर दूंगा. सो आई विल गेट द सर्वर फ्रॉम द स्टेट where actually I took the snapshot of it, where I actually took the checkpoint of it, and at that time obviously the server was running fine. तो अब मेरे केस में there would be no issue. पैच इंस्टॉल नहीं हुआ, that is okay, बट मैंने अपना एनवायरमेंट तो डाउन नहीं किया ना. एटलीस्ट मेरे को लगा कि पैच दिक्कत कर रहा है कोई मुझे, राइट. तो मैंने क्या किया, अपनी मशीन को टर्न ऑन कर दिया स्नैपशॉट से, सो दैट
At the end, my customers, my users will be able to access the application running on that server. So this is the benefit of taking the snapshots. The same thing you will be having on AWS, on Azure. ये जब काम करोगे आप सेम चीजों पे काम करोगे AWS पे या फिर Azure पे, वहां पे भी इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जब भी कोई क्रिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका पहले एक AMI बैकअप या फिर आप उसका स्नैपशॉट ले लो, सो दैट जब भी कुछ इश्यू हो आपके सर्वर में, आपका सारा एनवायरनमेंट डाउन ना हो, यू कैन रीस्टोर इट फ्रॉम द चेक पॉइंट, यू कैन रिस्टोर इट फ्रॉम द स्नैपशॉट. ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज नीडेड. अब देखो मुझे जब भी फ्रेश सर्वर ऑन चाहिए, मुझे आई अप्लाइड इट एंड मैं इसको कहीं से भी ऑन कर लूंगा, या फिर सर्वर 3 के लिए करना है, आई विल अप्लाई द स्नैपशॉट. ठीक है, एंड आई कैन टर्न ऑन द सर्वर, स्टार्ट. तो इसको इमेज के जैसा यूज कर सकते हैं. बिल्कुल, काइंड ऑफ यू कैन से. ओके, दिस यू कैन नॉट इमेज का मतलब ये नहीं है कि आप इसको यूज कर सकते हो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम. ये स्नैपशॉट सिर्फ इसी वीएम के साथ काम करेगा, नॉट विद अनदर. सिर्फ सर्वर 3 का अगर स्नैपशॉट है तो सिर्फ सर्वर 3 के साथ ही काम करेगा. बिल्कुल जी, बिल्कुल. मतलब अपन कोई दूसरा सर्वर इसको यूज करके नहीं बना सकते. नॉट एट ऑल. उसके लिए या तो फिर आपको बैकअप, रीस्टोर बैकअप करना पड़ेगा, बैकअप लेना पड़ेगा. स्नैपशॉट सिर्फ आप उसी वर्चुअल मशीन के साथ ही यूज कर सकते हो, किसी और वीएम के साथ यूज नहीं कर सकते. बट अजोर में अपन कर सकते हैं ना सर, इसमें नहीं कर सकते. किसने बोला अजोर पे कर सकते हैं? अजोर में अपन स्नैपशॉट किसी दूसरे वीएम में अटैच कर सकते हैं ना. वो तो उस स्नैपशॉट को यूज करके. ब्रो वो आपने डिस्क का स्नैपशॉट लिया होगा. हाँ सॉरी या. ठीक है, नॉट वर्चुअल मशीन. राइट राइट राइट. ठीक है, ओके. सो दिस इज डन. देखो अब मैं इसको जब भी मुझे चाहिए, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करता हूँ, राइट. अब एक और सिनेरियो में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैंने क्या किया, मैंने सर्वर पे कुछ इंस्टॉलेशन करना शुरू किया, राइट, और वो ड्यूरिंग दैट इंस्टॉलेशन मेरा सर्वर करप्ट हो गया, तो मुझे दोबारा से वीएम बनाने की जरूरत नहीं है. मैं इसको शट डाउन करूंगा और मैं अपना फ्रेश चेक पॉइंट अप्लाई कर दूंगा और मैं फिर से अपना काम करना शुरू कर दूंगा. दैट्स इट, एज इजी एज दैट. तो ये चेक पॉइंट और स्नैपशॉट का कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? सर वर्चुअल बॉक्स में मिलेगा कहाँ पे? जैसे वीएम बनाओगे, बना ली वीएम, बना ली वर्चुअल बॉक्स पे. हाँ सर, वर्चुअल बॉक्स वो वाला है, ओरेकल वाला सर. हाँ हाँ वो ठीक है, ओरेकल का ही होता है वर्चुअल बॉक्स. मैं बोल रहा हूँ कि वीएम बना ली आपने वहां पे. वीएम नहीं, हमने डायरेक्ट उसमें सर्वर इंस्टॉल कर रखा है. हाँ तो एक स्क्रीन शेयर कर सकते हो? जरूर सर. ओके, मैं आपको राइट देता हूँ स्क्रीन शेयर करने के. अच्छा, जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो, तो ड्यूरिंग अवर क्लासेस या फिर क्लास के बाद हम 10 मिनट ऐसा रख लेंगे जिसमें आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, राइट. तो जो भी आपके इश्यूज हैं मैं आपको ऑनलाइन ही इसमें हेल्प कर दूंगा. ठीक है, एक सेकंड में आपको राइट देता हूँ. एक सेकंड दो मुझे. शेयर स्क्रीन. अच्छा अभी शेयर करो. तो आज की क्लास हमारी मेजरली इट वाज फोकस्ड ऑन द virtual machines, right? The how to configure the hypervisors on your laptops as well as on your on like if you want to use networking server, in that case again you can get the access of it and you can log in onto the racks over there. सर ये ओपन है. अरे यार मेरे को लगा कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करनी थी ना आपने. यहाँ से तो मुझे कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा यार. राइट क्लिक करना है इस वीएम पे, जो भी वीएम है इस पर राइट क्लिक करो. हाँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है यार. हाँ जूम अभी पे देखो ना, स्क्रीन शेयर का एक ऑप्शन है, वही से शेयर करोगे तो अच्छा होगा. हाँ वो ज्यादा सही होगा, राइट. मुझे भी थोड़ा सा इजी रहेगा. पर चल
जूम में देखो मिडिल में एक ग्रीन कलर का बटन है, शेयर स्क्रीन। जूम में कंप्यूटर से अगर तुम कनेक्ट हुए हो तो जूम में देखो। कंप्यूटर से तो कनेक्ट नहीं किया है ना, मोबाइल से ही कनेक्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे यार एक सेकेंड रुकना जरा। शो सर्च, हाँ सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में क्या दिखा रहा है? सेटिंग्स में जाना एक बार। सिस्टम डिस्प्ले, स्टोरेज, नेटवर्क, शेयर्ड फोल्डर्स, यूजर इंटरफेसेस। नहीं, ये तो नहीं है यार। एनी डेस्क है इस सिस्टम पे? नहीं सर, एनी टेक्स्ट तो नहीं होगा सर। कौन सा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये? 11 है सर। 11 है। इस केस में यार एक वो एप्लीकेशन है ना, क्या नाम है उसका? सर बेटर होगा कि वो अपने जूम जो है वो कंप्यूटर से ज्वाइन करे ना। हाँ वो किया नहीं ना उसने, उसने फोन से ज्वाइन किया हुआ है। सो इधर यू कैन डू वन थिंग, आप अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर लो क्लास, और फिर जूम पे मुझे स्क्रीन शेयर कर दो। या फिर एक ऑप्शन आता है विंडोज 11 में, क्विक असिस्ट करके, देखो सर्च करो, आ रहा है। First asking what is the Windows version? Windows 11. क्विक असिस्ट है सर। हाँ इसको ओपन करो। नहीं तो सर ट्राई अगेन लेटर दिखा रहा है। आप एक काम करो, आप लैपटॉप से ज्वाइन करो क्लास और फिर अपनी स्क्रीन शेयर करो, ठीक है? ऐसे नहीं हो पाएगा। लैपटॉप से ज्वाइन करके मुझे बताओ फिर, ठीक है? या फिर ये कोई, इट इज नॉट अ बिग डील, गूगल कर लो, गूगल से भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है? कैसे स्क्रीनशॉट्स, कैसे स्नैपशॉट्स लेते हैं। ओके ठीक, थैंक यू। ओके ओके, सो आई रीशेयर्ड माय स्क्रीन। तो आई बिलीव आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा, ये भी सर्वर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। ओके Sir, one question is that हाँ जी प्लीज। there is a lab available in networking, right? Yes, it is there. When I try to log in, that press Alt Control Del. Yeah, But Karthik, my base machine. yeah. So see, that Control or Delete will not work. What you have to do, you have to type Control Alt Shift. Are you on your system right now, Karthik? Yeah. So you can share your screen. सर राइट साइड कंट्रोल डेल करेंगे तब भी हो जाता है। Okay. Karthik, share your screen. Oh, wait a minute. So guys, I would recommend you all to please configure your labs, okay? Because from tomorrow we are going to start our practicals, okay? We are going to start our labs. Okay. Should I go to that lab? Yeah, that something port will be there, right? Some 8100, or I will, or might be some port is assigned to your. Wait a minute. Okay, so start any of the server. अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? कंट्रोल ऑल्ट और क्या हो सकता है उसके? एरो? नहीं, my base machine gets task manager, right? Okay. No, I'm just asking for the another one. So he told us Okay. that we can type some other thing also. But anyways, double click on it. Now tap on Control Alt Shift. Right now, just go below. On screen keyboard and Control Alt Delete.
Now again Control Alt Shift. No, of your system, of your system. It is not needed here. Just Control Alt Shift. And go to none. Go up and select none. That's it. Now give the password. I think it's test 1 2 3. सर हम राइट साइड से कंट्रोल डेल करते हैं तब भी हो जाता है। क्या करते हैं? राइट साइड की जो कंट्रोल बटन होती है उसके साथ डिलीट बटन करते हैं तब भी ओपन हो जाता है। Okay, okay. Karthik, it's test 1 2 3, I believe. Test @1 2 3. Guys, password क्या है इसका? Default. Try with T capital. 1 2 3. Test 1 2 3. Yes. इसको लिख लो यार, मैं भूल जाता हूँ। मैं भी देखो, मैं ये भूल जाता हूँ, मेरे को पासवर्ड याद नहीं रहते बिल्कुल भी। So just इसको सेव कर लो and you can use it. The same thing you have to do for other machines also, Karthik. Thank you, sir. Okay, sure. Yeah, no problem. सर ये लैब की जो लिंक है मेल पे आई होती है क्या? हाँ जी, ये मेल पे मिलेगी। और गाइस जस्ट वन मोर थिंग, देखो, what and all videos uploads, what and all mails communication, it is going to be done from the networking team, right? इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, right? I'm not going to upload the videos. जो ये videos upload होती हैं, this is done by the networking team. ओके, जस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, प्लीज मुझे मत बोलना कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ या कुछ भी है। इवन अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट केस। कभी ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट एनी वीडियो, सो यू हैव टू कॉल टू योर मेंटर, ओके, एंड दे विल हेल्प यू आउट। वैसे जो जनरली वीडियो अपलोड होता है, वो जैसे आज हमारी क्लास हुई है, by tomorrow 11 a.m. or by noon 12, you will be able to get the video onto your portals. ठीक है, तो मेरा इसमें अपलोड करने में या कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट हेयर फॉर द टीचिंग, राइट? उसके अलावा आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ द रेफरेंस एंड ऑल। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको ड्यूरिंग अवर आपकी क्लासेस आपको जो हेल्प चाहिए, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, बट जो भी बैक एंड ऑपरेशंस हैं, राइट, वो सारा काम नेटवर्किंग टीम मैनेज करती है। इट इज नॉट मैनेज्ड बाय मी, राइट? तो जो भी आप ये ईमेल बोल रहे हो, अगर आपको ईमेल नहीं मिला है ऐसा, तो आप प्लीज एक बार अपने मेंटर को कॉल कर लो, जिसने भी आपका एडमिशन कराया है, राइट? सो ही विल गिव यू दीज द लिंक्स एंड ऑल। मेरे पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? सर सेकंड थिंग, मुझे ये कहना था कि जो मुझे लिंक आज आया है मेल से, जिससे मैं अभी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, यही लिंक से मुझे ज्वाइन करना है क्लासेस? The same link will be there, Naseem. The same link which they have provided, it is going to be the same. Okay. सेकंड थिंग मुझे ये जानना था, आई वांट टू नो कि जो आपने लिंक शेयर किया है क्लासेस के और ये शॉर्टकट कीज के, वो लिंक मैं कहाँ पे एक्सेस कर पाऊंगा? मतलब मीन्स अभी आपने शेयर किया है, किस जगह पे शेयर किया वो समझ नहीं आया। देखो, अभी मैंने लिंक शेयर किया, ठीक है? इस लिंक को क्लिक किया आपने? नहीं, वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ चैट पे डाला हुआ है ना? चैट पे नहीं मिला आपको? अच्छा, चैट पे जाओ, जूम की चैट पे जाओ। ओके ओके। अच्छा, जो ये गूगल क्लासरूम है, ये मैं मैनेज करता हूँ, ये नेटवर्किंग टीम मैनेज नहीं करती। तो इस केस में आप मुझे कभी भी पकड़ सकते हो कि सर आपने अपलोड नहीं किया, आपने कुछ भी ये नहीं किया। तो इस केस में आई एम आंसरेबल टू यू, ठीक है? क्योंकि दिस इज मैनेज्ड बाय मी। बाकी का जो भी सब चीजें हैं, दैट इज मैनेज्ड बाय द नेटवर्किंग टीम। सेकंड थिंग सर, अभी जो मुझे ये टैग पे मिल रहा है, ये मैं कॉपी पेस्ट करके मेरे इधर कॉपी कर सकता हूँ या फिर बाद में मैं एक्सेस कर पाऊंगा ये लिंक? सॉरी नसीम, ये जो अभी आपने टैग पे लिंक शेयर किए हैं, ये डिलीट हो जाएगा नसीम। जैसे ही मैं क्लास एंड करूंगा, ये हाँ। चैट, ये लिंक डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको मुझे अभी अभी ज्वाइन कर लो ना, फोन से ज्वाइन कर लो, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है? और एक काम और कर सकते मेल भी तो आ गई है, मेल भी तो आ गई है जीमेल पे। हाँ, एवरीथिंग यू विल गेट। बट अगर ऐसा कुछ भी है तो क्लासरूम एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम एंड्रॉयड और फ्रॉम योर iOS। आप बता रहे थे सर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दो, हाँ, जो ये मैं इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिएगा, बिल्कुल, अगर किसी के पास अवेलेबल होगा तो वो वहीं पे पेस्ट कर देगा। मुझे बस 2 फॉर द मिनट दो, हेल्पिंग पर्सन। मुझे 2 मिनट दो बस आप।
मैं एक बोला ही था आपको, मुझे याद दिला देना कि आई हैव टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। एक सेकंड दो मुझे। नसीम बोलो आप इतने, क्या इशू? सर ये इससे इमेज कितने दिन का ट्रायल वर्जन? कौन सा? सर्वर 90 है जी। 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने। हाँ और जी, 10? 3 महीने के लिए। ऐसा नहीं है अगर आपने एक डाउनलोड कर लिया, अगली बार 3 महीने खत्म हुए तो दूसरा ISO डाउनलोड कर लेंगे, कोई इशू थोड़ा ना है ना। और गाइस, बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग दैट आई एम गिविंग यू, ठीक है, तो मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है वो सारी रियल सिनेरियो बेस्ड है, कंपनीज में कैसे काम हो रहा है। तो आप अपने सीवीज में डाल सकते हो, इफ यू हैव नॉट एवर वर्कड ऑन द सर्वर्स, स्टिल you can mention in your CV that you have knowledge of servers and you worked on the servers for 2 years. जो कंटेंट में दे रहा हूं, जो लैब्स में करवा रहा हूं, उस बेसिस पे यू कैन मेंशन इन योर सीवीज। अगर आप किसी और प्रोफाइल पे भी काम कर रहे हो, जैसे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स है, राइट, बिल्कुल ही अलग प्रोफाइल, आईटी का आई भी नहीं जानते, राइट, सो दे जस्ट मेंशन दिस, I told them to mention this in their CV and now they are working as a system administrator. ठीक है, तो जिसको नॉलेज नहीं है या जिसने कभी काम नहीं भी किया, इन दैट केस एट द एंड ऑफ दिस होल कोर्स यू कैन मेंशन इन योर सीवी दैट यू हैव 2 years of experience on servers। ठीक है, अच्छा मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, एक सेकेंड दो मुझे। एंड रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब चीजें आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। जो चीजें मेरे हाथ में, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। सर हाँ जी, एक क्वेश्चन था, बट आपने भी इस टॉपिक पे नहीं है, बट मैं नॉर्मली मैं फेस बिल्कुल कर रहा बिल्कुल, था। हाँ हाँ पूछो ना। तो एक इशू आ रहा है सर, जब वर्चुअल मशीन में कनेक्ट करता हूँ हम्म, तो इशू आ रहा है कि ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड द प्राइमरी डोमेन फेल्ड। हाइपर वी पे आ रहा होगा आपको वो। हाँ, जब मैं अज्योर के थ्रू वर्चुअल मशीन होस्टेड है, हाँ अज्योर, हाँ, जब मैं उसे लॉग इन कर रहा हूँ ओके, एक काम कर तब देना ये वहां पे, एरर आ रहा है। एक काम कर देना वहां पे ना रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स करके ग्रुप बना होगा सर्वर के अंदर, हाँ, ठीक है, उसके अंदर वो यूजर ऐड कर देना जिस यूजर से आप कनेक्ट कर रहे हो वीएम को। नहीं सर, यूजर एडी पे एडेड है। यूजर एडी पे एडिड है, ओके, राइट, बट यूजर एडी कौन सी है, ऑन प्रिम एडी है या क्लाउड एडी है? ऑन प्रेम एडीएस। ऑन प्रिम एडी से यू वांट टू लॉग इन ऑन टू एज्योर सर्वर। हाँ, उन्होंने वो VMware को यूज करके किया है, हाँ, और जो VM है वो अज्योर पे होस्टेड है। नहीं ऐसा, अगर उस पर तो लॉगिन तो तभी होगा ना, या तो ऑन प्रेम आपने वो किया हुआ है, एक्सप्रेस राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हाँ हाँ, वीनेट पेयरिंग है। वीनेट क्लियरिंग है उधर, और मतलब एक्सप्रेस, आपका ऑन प्रेम ऑन, मतलब आपकी जो ऑन प्रेम एडी है वो क्लाउड एडी से सिंक हो रहा है। नहीं, सर उन्होंने एडी जो है, एक एडी उन्होंने बना के रखी है क्लाउड पर भी, बट वो सर्वर के अंदर बनाया है उन्होंने, अज्योर एडी को यूज नहीं किया है। मैं समझ गया, लोकल लोकल यूज कर रहे हैं वो लोग, लोकल हाँ, यूजर्स यूज लोकल कर यूज रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ, तो लोकल यूजर में भी वहां पे रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स दिखेंगे ना, एक ग्रुप होगा वहां पे आरडीएस ग्रुप का, आरडीएस नाम से, रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स के नाम से, ठीक है, वहां पर जाके उस पर्टिकुलर यूजर को ऐड कर देना। सर मैं अकेला नहीं, पूरा मतलब पूरे क्लाइंट क्लाइंट के पास ये इशू आ रहा था, बट वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, बट वो बता नहीं रहे कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, देखो एक तो ये चीज हो सकती है, राइट, सेकेंड देयर वुड बी द इशू विद द डीएनएस ऑल्सो, डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो पा रहा हो एट द क्लाइंट एंड, जिस भी सिस्टम से आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट, हाँ, वो आपका डीएनएस रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, वो आपकी डोमेन नेम रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, उसके कारण भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और अगर वर्चुअल मशीन सर उस पे रजिस्टर, डोमेन रजिस्टर ही ना कर पा रही हो, तो भी वो डीएनएस का एरर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, वहां पे उस सर्वर पे एक काम करना, उस सर्वर पे जाओ और उसका एक बार डीएनएस चेक करो क्या है, ठीक है, हाँ उसका डीएनएस होना चाहिए आपका ऑन प्रिम एडी का डोमेन कंट्रोलर का डीएनएस, ठीक है, हाँ, ऑन देन प्रेम ओनली का। यू विल बी एबल टू, हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये एक बार मेक श्योर कर लेना, ओके। और अगर एज्योर पे है तो वहां पे दो ऑप्शन होंगे, एक तो एज्योर प्रोवाइडेड डीएनएस और एक कस्टम डीएनएस, एक तो कस्टम अगर डीएनएस। आपको कस्टम डीएनएस सेट करना है वहां पे, ना कि एज्योर प्रोवाइडेड डीएनएस, ठीक है। हाँ,
अच्छा, MCSA सितंबर बैच, एक सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, बैच 2023। ये इनवाइट लिंक कहाँ से आता है? जस्ट अ सेक। हाँ, copy link. Okay guys, so the WhatsApp link is in your chat. Just a second. इसको ज्वाइन कर लो प्लीज सभी, क्योंकि अगर क्लास एंड करूंगा तो ये ग्रुप डिलीट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्लासरूम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है? मैं ये क्लासरूम पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। तो कुछ भी अगर ऐसा होता है, मैं कभी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि देखो कई बार मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, अगर रात को कोई मीटिंग है मेरी, तो इन दैट केस अगर कोई क्लास नहीं होती, सो आई विल पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके सर ये MCSC और MCSA में डिफरेंस क्या होता है? MCSA is basically an administrator and MCSE is basically an expertise जो पूरा डिजाइन करता है। जैसे ये होता है ना आपका Azure 104 एंड देन Azure आर्किटेक्ट, और या फिर Azure 900 और Azure 104। तो 900 क्या है? फंडामेंटल्स, बेसिक, जिसको बस पता है कि क्या होता है, राइट? उसके बाद में 104 क्या है? जो उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो जो उसको पूरा मैनेज कर रहा है। उसके बाद आर्किटेक्ट क्या है? जो पूरा उसका डिजाइन कर रहा है, दैट हाउ डेटा विल बी फ्लो, हाउ द वर्चुअल मशीन्स आर गोइंग टू क्रिएटेड, हाउ VNet peering is going to be there, how network communication is going to be there. So all these things are going to be done by the architect. तो expertise क्या करता है? expertise आपके पूरे डेटा सेंटर को डिजाइन करता है। MCSC क्या करता है? जिसने MCSC सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो वो क्या करता है? वो पूरे आपके डेटा सेंटर को डिजाइन करता है, ऑन प्रीम डेटा सेंटर को डिजाइन करता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, काम उसने भी वही करना है। बस उसका ये आ गया कि जस्ट वहां पर वो सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, वो सिर्फ बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इसको यहाँ बना दे, इसको यहाँ बना दे, एंड देन कनेक्टिविटी ऐसे करना है, DNS इधर रहेगा, फाइल सर्वर्स ऐसे कॉन्फ़िगर होंगे। सो एवरीथिंग वो आपको एक डिजाइन, एक लेआउट बना के दे देगा, एंड बेस्ड ऑन दैट लेआउट यू हैव टू कॉन्फ़िगर ऑल द थिंग्स इन द सर्वर्स। तो ये काम होता है MCSC का। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? आज थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। कल से ट्राई करूंगा दैट वी विल एंड अप, और या फिर टॉपिक अगर खत्म नहीं होता, सो जैसे टॉपिक खत्म होगा, सो आई विल बी ट्राई टू कंप्लीट द टॉपिक बाय 11:30। ओके, या फिर अगर थोड़ा सा लंबा टॉपिक चल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, चलेगा? ओके सर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी ये प्री रिक्विजिट वाले डाउट है, ये आप आज ही क्लियर कर लो और अपनी VMs बना के रख लो। ठीक है, सो दैट कल अगर हम लैब करते हैं तो मेरी क्लास करने के बाद आपके पास थोड़ा टाइम हो, या फिर आप मॉर्निंग में, या आपको जैसे भी टाइम लगे, आप अपने लैब कॉन्फ़िगर करो, और ड्यूरिंग दैट लैब कॉन्फ़िगरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। नहीं तो फिर क्या होगा, आपकी डाउट्स इकट्ठे होते रहेंगे और हमारी मतलब आप अपने एंड से भी बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाओगे। ठीक है, सो डू द थिंग्स अलोंग विद मी, राइट, सो दैट जहां भी इशू है वहीं पे स्टॉप किया और उसी टाइम अपनी क्वेरी क्लियर कर ली। ठीक है जी, ओके, चलो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 10 o'clock, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट lab that is related to Active Directory, major thing. Okay, ओके सर। Thank you, sir. okay, bye everyone, good night, Good take night, care. sir. Bye Thank sir. you, Good sir. night. Thank you. Bye, sir.